जी, y is equal to 2x plus 5, 2x plus 9. जी हुसैन, It's correct. it's correct. Okay, so if you have the same answer, if you want to tell the same answer, so I think it's better not to raise your hand और बार बार मैं समझा तो शायद आप एक क्वेश्चन पूछने लगे हैं. So if you want to tell that this is the final answer जो उन्होंने बताया है, so you can simply write in the chat box as well. थोड़ा सा टाइम सेव होगा हमारा. So देखिए जिनको नहीं समझ आया या जो क्लियरेस्ट जो कि फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, here you want to find the equation of this line L, and the information for that line was having only one coordinate. And when you have only one coordinate, so you can't find the equation of that line because you can't find the gradient. You don't have the gradient for that. But the other hint was that this line is parallel to that other line. So parallel means their gradients will be equal. So we will find the gradient from that other line. Mean the other line, the gradient of the other line will be, the points 2 are given 3, 4, 5, 8. So gradient is 8 minus 4, 5 minus 3. So 4 over 2 is, the gradient is 2. So the gradient is 2. So it means the gradient of the line L is also 2 because they are parallel. To find the equation, we need 1 point. Yes, 1 point is given on that line. So it is y minus 7 is equal to 2x plus 1. Y minus 7 is equal to 2x plus 2. So y is equal to 2x plus 9. Or if you have shifted x on the other side, in that case, it will be minus 2x plus y is equal to 9. Next question. Muhammad Fahim. This is A1. Recheck your timetable. Okay. Next question. G, please stay quiet. Start. आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस का लेवल ऊपर आता जाएगा. अगर आप जो पीछे बैठे हैं, अगर आपको विजिबिलिटी का इशू है तो ये फ्रंट सीट्स पे स्पेस है. यस. 2 minus 3. The line L and M, again I would say don't wait for me, start करें, सोचे इसके ऊपर. The line L and M are perpendicular. The line M is passing through 2 minus 3. Equation of the line L is 2x plus 3y is equal to 4. Find the equation of line M. Add math students must be enjoying a lot. If you have any question, then raise your hand. If you want to tell simply answer, then write in the chat box.
Yes, Hussein, what do you want to ask? Sir, I'm typing the answer in the chat box because you told us Okay, I was a part. okay, okay. So first of all, you need to see कि what's the main idea about for this question. अगर हम मुझे प्लीज सुनिए जिनको नहीं समझ आया क्वेश्चन, आई होप के मेजोरिटी को आ गया आइडिया इनका पता कि if you want to find the equation of the line m, so you need one point and the gradient. The point is given on that line, but you don't have gradient. So we can take the help of the gradient from the other line, because both the lines are perpendicular. We know the gradient of both the lines are negative reciprocal of each other. अगर एक लाइन का ग्रेडियंट 1/3 है तो उसके जो परपेंडिकुलर होगी उसका होगा -3. Sign change and reciprocal. If one line is having a gradient 2/3, then the line which is perpendicular to that will have -3/2. And I think we did kuch 7-8 practice kal bhi. Now, do we know the gradient of the line L? Yes, we know the equation. So how can you find the gradient through equation? By comparing this with y is equal to mx plus c. See, if we have the equation y is equal to 3x plus 7, what's the gradient of this line? The gradient of this line will be 3. But make sure your y is subject. Y is equal to mx plus c. And if your equation is like, say, y minus 7x is equal to 4, then what will be the gradient of that line? You need to shift minus 7x on the other side. You need to make y subject. So it will be y is equal to 7x plus 4. So in that case, gradient will be 7. If you have your equation 2y plus 3x is equal to 1, then what will be the gradient? I will come back to that particular question. What will be the gradient of the line 2y plus 3x is equal to 1? -3/2. क्योंकि होगा क्या कि पहले आप 3x से शिफ्ट करेंगे, it will become -3x. To make y subject, 2 उधर डिवाइड होगा, और जब वो 2 डिवाइड होगा तो -3 का डिनोमिनेटर 2 बन जाएगा. So the gradient will be -3/2 for this. Now let's discuss this particular question. What's the gradient of this line? I am getting the answer. You are saying -3/2. -2/3. You are saying -2/3. Gee, everyone is getting -2/3. सबको पता है इसका ग्रेडियंट -2/3 कैसे आया, या किसी को नहीं पता? प्लीज लेट मी नो. ये यही है टाइम. ये नो हम बहुत आगे पहुंच गए, पता तेरे ग्रेडियंट इसका नहीं फाइंड करना आया. Okay, let's see. Let's find out the gradient of this line in slow motion. डायरेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों ने डायरेक्ट किया है तो थोड़ा सा इसको स्लो करते हैं. To make y subject, we need to make y is equal to mx plus c form. So shift 3x on the other side. It will become -2x. So shift 2x on the other side. It will become -2x plus 4. अब 3 डिवाइड करेंगे हम. जब उधर 3 डिवाइड करेंगे तो दोनों के साथ डिवाइड होगा, तो इट विल बी -2/3x plus 4/3. So here the gradient of the line L, the gradient of the line L, the gradient of this line is -2/3, not the gradient of M. So line L का जो gradient है, इस line का gradient वो है -2/3. तो M का gradient क्या होगा? Because they are perpendicular, so they will be negative reciprocal. So its gradient will be sign change and reciprocal. Oh, really? I think after some time I should lock the meeting, क्योंकि इतनी देर तक अगर रूम में इंटर होते रहेंगे तो मैं फिर वो इंटर और एग्जिट ही करता रहूंगा. सॉरी.
नहीं इंटरव्यू तो देखें कौन हो रहा है, मौलाना फजलुर रहमान. Okay, so gradient of the line perpendicular to that will be positive 3 by 2. So now it's easy because gradient पता चल गया और point already given था. So it will be y minus y1 minus, the point is minus 3, so it will become y plus 3, and gradient is 3 by 2. X minus x1 mean x minus 2. So multiply 3 here, 2 in here, 2y plus 6 is equal to 3x minus 6. So we got 2y is equal to 3x minus 12. अगर आपने कोई और फॉर्म लिखी है, वो x को उधर शिफ्ट किया, तो आप अपना उसके मुताबिक आंसर मैच कर सकते हैं. So I'm getting the answer 2y is equal to 3x minus 12. Any question? Let's move forward. क्वेश्चंस को थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं. कैलकुलेटर अलाउ है, वाह अलाउ है, जितना चाहें यूज करें. आबिदुल्ला अंसारी, पिछले वाले का आंसर क्या था? पिछले वाले का आंसर था 2y is equal to 3x minus 12. 2y is equal to 3x minus 12. So here is the next example. See the diagram. Everything is labeled on the diagram. This is point A. This is point B. The coordinates of A and B are given. You have to find the equation of line L. Again, the diagrams are not to the scale. Hussein is saying that its equation is y is equal to x plus 1. Muniba is saying y is equal to x minus 1. Let's see which one is correct. दोनों correct है. X plus 1 आपका आ रहा है. X plus 1. So Muniba, you need to recheck. I think you can majority are saying x plus 1. Alishba is saying x plus y is equal to x plus 1. Let's see. Ji, who wants to tell the methodology which will be used here in this particular question? Ji, Hussein. What method did you use to find the equation of line L? Okay, sir. So basically, we know that line L is perpendicular bisector of AB. So we know that the gradient of AB will be the negative reciprocal of that. So वो gradient मिल जाएगी line L की. और वो जो जिस तरफ intersect कर रही है ना AB को वो midpoint बन जाता है. So we use that midpoint in our equation to find the equation of line L. वो इस तरह apply Okay. करके हम. Right. So basically, देखिए अगर आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी, लेट्स से हियर यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L, तो यू नीड ग्रेडियंट एंड वन पॉइंट ऑन दैट लाइन.
तो ग्रेडियंट आपने सोचा कि both the lines are perpendicular, you have seen that sign, perpendicular sign. तो आपने सोचा ए बी का ग्रेडियंट, तो पॉइंट्स गिवन है, तो यू कैन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दैट एंड नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दैट विल you will get the gradient of the line L. But the problem is point, where to get that point from. So आपने फिर ये देखा those two cut marks. What does that mean? कि both the sides are equal, so the whole line AB is equally divided. So इसका मतलब कि ये जो point है, this point is the midpoint of AB. If this is a midpoint and the line L is also passing through that point, so by using those midpoint formula we can find that point, और वो point line L पे भी lie कर रहा है. और in short अगर बात करूं तो line L is the perpendicular bisector of AB. We did perpendicular bisector, bisect भी कर रहा है और perpendicular भी है. So actually you are finding the equation of perpendicular bisector of AB. L is a perpendicular bisector of AB. So first find the gradient of AB. मैं उनके लिए कर रहा हूं जो जिनसे कोई नहीं हुआ या कोई मिस्टेक हो गई है, वो आंसर नहीं आ रहा, मैच नहीं हो रहा. सो ग्रेडियंट ऑफ AB, y2 minus y1 x2 minus x1, so it is minus 4 over 4. negative 1 is the gradient of the line AB. m के साथ ये मैंने prefix में AB इसलिए लिखा है just to make it clear for you कि this is the gradient of AB. ml में लिख देता हूं the gradient of the line L. So minus 1 is the gradient of AB, so it's negative reciprocal. Sign change positive, and the reciprocal of 1 is also 1. So gradient of the line L will be 1. Now we need to find that particular point, जो कि इन दोनों का point of intersection है, और वो यहाँ पे midpoint से हो सकता है. So apply midpoint 2 plus 6 over 2, average of x coordinate 7 plus 3 over 2, average of y coordinate. So 4 and 5. So this midpoint, the line L is also passing through that particular point. So it means you have one point on the line L. So line L का gradient भी आ गया, एक point भी आ गया, so we can find the equation of straight line. So y minus y1 mean y minus 5 is equal to m1 x minus x1. So y minus 5 is equal to x minus 4. Y is equal to x plus 1. G, is that clear? Any question? Next question. Again, I'm telling you all the diagrams are not to the scale. Question start नहीं करना, सिर्फ सोचना है इसके ऊपर पहले. And you need to tell me its methodology, कि आप क्या क्या method, क्या क्या steps use करेंगे to find the coordinates of A. Yes, Zaki, wait करें थोड़ा सा. I want के थोड़ा सा सब थोड़ा सोच ले, फिर आपसे मैं पूछूंगा.
कहीं पे परपेंडिकुलर नहीं दिया तो एजम्पशन नहीं करनी कि ये परपेंडिकुलर है। वेट थोड़ा सा सोचने दे, मैं चाहता हूँ कि सबको साथ लेके चला जाए। आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स एड मैथ लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते, तो उनको ये क्वेश्चन फौरन समझ आ गया। तो बट थोड़ा सा हम सबको टाइम देते हैं सोचने का। यस यस यस, यू आर राइट। सो बेसिकली यस, सलमान आप बताएं। सर आई थिंक कि पहले हमें बी सी की तो इक्वेशन पता है, तो हम डी की इक्वेशन फाइंड करके दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। Yes, you are right. So basically the idea is P is the point A. The point A is the point of intersection of these two lines. And I told you, एक हमने एक point लिखा था कि how to find the coordinates of point of intersection. Just solve the equations of those two lines simultaneously. तो इसका मतलब है कि अगर हमने point A find करें तो we need to solve the equations of these two lines simultaneously. So it means we should have the equations of these two lines. Do we have? Yes, we have the equation of the line BC, which is 2x plus y is equal to 1. But the equation of the line DE is not given. So first we need to find the equation of the line DE. और equation of the line DE find करना आपके लिए मुश्किल नहीं है. The coordinates are given. So start. Muniba has the answer 0, 1. Zero one. आपका भी ये 0, 1. Hussein is also saying 0, 1. तो थोड़ी सी आपको 8th क्लास की प्रैक्टिस भी करनी पड़ रही है, सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशंस। एटलीस्ट इस लेवल पे आके कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए या कुछ और। सो द ग्रेडियंट ऑफ DE, व्हाट्स द ग्रेडियंट ऑफ DE? व्हाट वाज दैट? DE लाइन का ग्रेडियंट क्या आया था आपका? 2, पॉजिटिव 2। और मुझे डायरेक्ट, आई एम राइटिंग द इक्वेशन डायरेक्टली। जी, व्हाट्स द इक्वेशन? y is equal to 2x plus 1. So once you have the equation of the line DE and the equation of the line BC into equations को, now you will solve them simultaneously. Simultaneously solve करने के आपने multiple methods किए हैं। आप में से अक्सर substitution method use करते हैं, मीन ये y is equal to x plus 1 को उधर substitute कर दिया। So you can find the value of x and y by substitution, and you can find the you can apply the other method, mean that elimination method, वो जिसमें आप कोएफिशिएंट इक्वल करके फिर आप सब एलिमिनेट करते हैं एक वेरिएबल। सो इट्स अप टू यू, जो मर्जी आप मेथड यूज करें, बट आई होप कि सबको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत आती है। एलिमिनेशन अलाउ होता है, पूछ रहे? बिल्कुल अलाउ है। जी, व्हाट्स योर नेम? हसनैन। हसनैन ने कहा, सुनिएगा प्लीज, लिसन टू मी। हसनैन इज सेइंग कि हम तो कैलकुलेटर से भी ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां से डायरेक्ट हम कर लें और डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन का। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी, आपको मैंने बताया था वर्किंग के मार्क्स होंगे। अब आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का उसने 1 मार्क रखा होगा, उसने यहाँ पे लिखा होगा साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए M1, and finally after solving them you got a answer, the coordinates of A you got 0, 1.
और उसने आंसर रखा, उसके लिए रखा होगा A1। सो अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं तो विल यू गेट M1? नो। और अगर M1 नहीं मिला तो क्या आपको A1 मिलेगा? नो। आई टोल्ड यू दिस थिंग कि A1 इज आंसर, A mark is depending on your M mark. A mark, A1 cannot be given unless associated method mark is earned. So यहाँ पे मेथड मार्क, अगर मेथड शो नहीं किया तो आपको मेथड मार्क नहीं मिल रहा, तो A1, सो यू आर लूजिंग 2 मार्क्स उस क्वेश्चन में जो आपको आता था। हाँ, आप सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर में रीचेक कर सकते हैं, आप देखें क्या, या आप पहले से आंसर निकाल लें, उसकी वर्किंग थोड़ी सी फिर शो कर लें, देखें आर यू गेटिंग द आंसर एज पर दैट, तो ये कर सकते हैं। बट यू नीड टू शो सम वर्किंग, जो एक 1 मार्क है तो यू नीड टू शो सम वर्किंग। So I hope everyone is getting the same answer A01. किसी का कोई different answer आया हो या किसी को समझ नहीं आया तो you can ask. Next question. Again, it's a, मैं बार बार ये जो बता रहा हूँ, आपने ये जो जितनी भी डायग्राम्स है ये स्केल पे नहीं है। अगर ये मैंने स्केल के ऊपर ड्रॉ की होती तो देखिए ये ए बी के कोऑर्डिनेट्स ये पॉसिबल ही नहीं है, जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे पॉसिबल हैं ये, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन होती है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा सेम रहता है। मैंने एक में 2 डाला हुआ है और एक में 5 डाला हुआ है। सो प्लीज, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्केल पे नहीं है डायग्राम, ये वैसे ही मैं स्केच बना रहा हूँ, जस्ट हम सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो इसको डायग्राम को, और ये अच्छा एक और बात भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो उसमें मेंशन हुआ होता है कि द आंसर और द वर्किंग ऑफ दिस एज पर एक्यूरेट ड्राइंग विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। कुछ लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जो गिवन होती है क्वेश्चन में उसको ग्राफ के ऊपर अपने पास एक्यूरेटली ड्रॉ कर लेते हैं और जो अननोन कोऑर्डिनेट होता है वो फाइंड कर लेते हैं ग्राफ से। मेन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट नहीं, तो उसमें क्वेश्चन भी मेंशन होता है। सो वी आर कंसीडरिंग कि ऑल द डायग्राम्स आर नॉट टू द स्केल, जो कि यहाँ पे आप कंफर्म हो रहा है ए और बी जो मैंने ड्रॉ की तो पॉसिबल ही नहीं है, या पॉसिबल है। तो हम सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो नाउ द क्वेश्चन हियर इज यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। जस्ट मेक अ स्कीम इन योर माइंड फर्स्ट। फौरन से क्वेश्चन में जंप नहीं करना, अपने माइंड में इस क्वेश्चन को सी फाइंड करने के लिए एक स्कीम डेवलप करें, स्कीम बनाएं, और फिर उसके लिए देखें कि क्या 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 फाइंड करना पड़ेगा। Just think about it. Dua Ilyas, I hope you are working in your head. Faiz, Daniel, Zedi, Abdul Ahad, please turn on your cameras. Ji, who got the complete scheme of work in that particular question? किसी के माइंड में क्या आ गया?
Faiz, where are you? Okay, ऊपर आ गए आप. So Faiz wants to tell us. G Faiz. सर पहले I फिर can't. क्योंकि Okay. ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है तो हम ए सी का उससे निकाल लेंगे ग्रेडियंट. ए सी की फिर ग्रेडियंट के थ्रू हम उसकी हमारे पास पॉइंट ए भी है, हम लाइन का फॉर्मूला निकाल लेंगे तो फिर हम ए सी और बी सी को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे पॉइंट सी के लिए. Yes, yes, Faiz, you are right. So someone from here in person जो है उनमें से कौन बताएगा और ऐसा बताएगा कि सबको आवाज आए. ये मुश्किल काम है. Yes, Reem. Yeah, so basically, if you want to find the coordinates of C, so C is the point of intersection of which two lines? BC and AC. So अगर हम BC और AC की equation को simultaneously solve करें तो we'll get the coordinates of C. अब problems क्या है? BC की तो equation है. We don't have the equation of AC. Now अब हमारी working होगी to find the equation of AC. हम वापस जाते जा रहे हैं. How to find the equation of AC? To find the equation, we need gradient and one point. Yes, we have one point on the line AC, that is point A. But we don't have gradient. और gradient find करने के लिए we know the line AC and AB are perpendicular. और अगर वो perpendicular हैं, तो their gradients will be negative reciprocal. So it means we need the gradient of AB. And the gradient of AB तो आप बता सकते हैं because it is the two coordinates are given. So ये मैं reverse चलाऊं, अब मैं straight way is कि first we'll find the gradient of AB. The gradient of AB का negative reciprocal will be the gradient of AC. By using the gradient of AC and the point A, you can find the equation of the line AC. और जब AC line की equation आ जाएगी, BC line की equation already given है, you will equate them, you will solve them simultaneously to get the coordinates of C. रैंडम वैल्यूज मैंने दी हैं तो आपके क्वेश्चंस की कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है. डिड यू गेट द आंसर? व्हाट्स द आंसर? -2 over 9, 14 by 3. You are saying -2 by 9, 14 over 3. जी आंसर्स मुझे बता रहे हैं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इस क्वेश्चन की एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन थोड़ी सी टफ हुई होगी. बट जो भी कैलकुलेशन है आपकी कैलकुलेशन टोटली वही प्रीवियस 8th क्लास वाली है. साइमल्टेनियसली सॉल्व करना ग्रेड 9 में जो आप अप्लाई करते हैं दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या जो भी करते हैं आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए. Who wants me to solve this question? Should I do it here? Okay, I'm going to attempt this question here क्योंकि a bit calculation थोड़ी सी शायद मुश्किल है. Okay, first of all we'll find the gradient of AB. I hope वो तो find हो गया होगा. 7 minus 3 over 5 minus 2, which is 4 over 3. That's the gradient of AB. So what is the gradient of AC then? Negative reciprocal. So negative 3 by 4. So this is the gradient of AC. Now the equation of AC के लिए y minus y1, y minus 3. To find the equation of AC, I'm using the point A, which is 2, 3. So y minus 3 is minus 3 by 4 x minus x1. So multiply 4 with y minus 3, 4y minus 12, and multiply minus 3 inside minus 3x plus 6. So we got 4y is equal to minus 3x plus 18.
आप जो मेथड भी आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं. We need to solve this equation and this equation simultaneously. Okay, I am going to use the substitution method. Y is equal to minus 3x plus 4. I am going to use here. Y is minus 3x plus 4 is equal to minus 3x plus 18. आपको जो easy लगता है आप वो करें. So minus 12x plus 16 is equal to minus 3x plus 18. So minus 12x plus 3x is minus 9x and 18 minus 12 is 2. So we got x is equal to minus 2 by 9. So now put this value of x in any of the above equation. You will get the y coordinate minus 3x minus 2 by 9 plus 4, which is 3 and 3 cancelled, so 2 by 3. So 2 by 3 plus 4. 2 by 3 plus 4 is 14 by 3. So the coordinates of C are x coordinate is minus 2 by 9, y coordinate is 14 by 3. So I hope you understand all these concepts. Concepts वही पुराने चल रहे हैं. थोड़ा सा क्वेश्चन का मैं लेवल आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल कर रहा हूँ और कल हम इसको मजीद मुश्किल करेंगे. Any question? Thank you so much. See you tomorrow. Allah Hafiz.